Hello friends, in last two videos we have learned what is blood pressure and how the blood pressure is measured. Now in this video we will learn about hypertension. Hypertension is a clinical condition where the blood pressure of the body is elevated more than normal and it causes various damages to the body organs. So besides the definition, learn about various international bodies which are involved in research and giving guidelines from time to time. Thirdly, what are the various other definitions of abnormal blood pressure, causes of hypertension. Hypertension, also known as silent killer, is defined as high blood pressure that is persistently elevated in blood vessels. At international level, there are three bodies which are involved in research and framing various guidelines that are followed worldwide. The first one is Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, famously known as JNC. The second is ACC or AHA, American College of Cardiology. The third is ESH, European Society of Hypertension. In India, we have IHCI, that is Indian Hypertension Control Initiative. As the name indicates, it is the body at the national level which is involved in research, awareness and screening of hypertension in Indian society. Now let us see various guidelines as defined by international bodies. The first one is JNC 7. Now according to JNC 7, a systolic blood pressure less than 120 and diastolic blood pressure less than 80 is defined as normal blood pressure. If a person has a systolic blood pressure between 120 to 139 or a diastolic blood pressure between 80 to 89, then it is called as pre-hypertension or at risk for hypertension. Hypertension has been classified into two stages, stage 1 and stage 2. In stage 1, the systolic blood pressure is between 140 to 159 and diastolic is between 90 to 99. In stage 2, the systolic blood pressure is more than 160 and diastolic blood pressure is more than 100 mm of mercury. Now, according to 2017 ACC guideline, there is a big difference. According to JNC guideline, hypertension was more than 140 systolic or more than 90 mm of mercury diastolic was defined as hypertension. But according to ACC guideline 2017, a systolic blood pressure equal to or more than 130 and diastolic blood pressure more than 80 has been defined as hypertension. So according to ACC, the normal blood pressure is less than 120 by 80 and a blood pressure between 120 to 129 systolic and diastolic less than 80 has been defined as elevated. Whereas the hypertension has been classified into two stages. Stage 1, when the systolic blood pressure is between 130 to 139 and a diastolic blood pressure is between 80 to 89. And stage 2 hypertension, when the blood pressure is more than 140 by 90. In 2023, European Society of Hypertension has defined hypertension as more than 140 by 90. According to ESH, the normal blood pressure category has been divided into three. If the blood pressure is less than 120 by 80, it is optimal. If the systolic blood pressure is between 120 to 129 and diastolic between 80 to 84, it is normal. If the blood pressure is between 130 to 139 systolic and 85 to 89 diastolic, then it is called as high normal. According to ESH, hypertension has been classified into three grades, grade 1, 2 and 3. In grade 1, the systolic blood pressure is between 140 to 159 and diastolic is between 90 to 99. In grade 2, the systolic blood pressure ranges from 160 to 179 and diastolic 100 to 109. And in grade 3, the systolic blood pressure is more than 180 by 110. So in nutshell, if we compare all the three definitions of three bodies, according to JNC and European Society of Hypertension, a hypertension
is when the systolic blood pressure is more than 140 and diastolic blood pressure is more than 90. But in ACC 2017, the level is reduced to 130/80. So, according to ACC, if the blood pressure is more than 130/80, it is hypertension. अब 4 ऐसे क्लिनिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में हमें मिलती हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, जिसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर मोर देन 180/120 और उसके साथ साथ डेफिनेशन के लिए एंड ऑर्गन डैमेज का होना अति आवश्यक है। एंड ऑर्गन डैमेज को याद करने के लिए निमोनिक है बरक, B फॉर ब्रेन, A फॉर आर्टरीज, R फॉर रेटिना, K फॉर किडनी एंड H फॉर हार्ट। इसलिए इमरजेंसी में अगर बीपी 180/120 का कोई मरीज आता है और जिसमें आप एंड ऑर्गन डैमेज पाते हैं, तो इससे अटर इमरजेंसी एंड इमीडिएट बीपी रिडक्शन मस्ट बी डन। सेकेंड क्लिनिकल कंडीशन इज हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज, जिसे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, यूजली मोर देन 160/100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज का होना जरूरी नहीं है। इसमें हाइपरटेंशन के साथ साथ तेज सर दर्द, सांस का फूलना, नाक से खून बहना हो सकता है। रेटिनल डैमेज भी मिल सकता है, लेकिन पैप्लिडिमा नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में भी इमीडिएट ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना अति आवश्यक है। तीसरी कंडीशन है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, दैट इज मोर देन 140। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा 90 से कम ही रहता है और ये अक्सर बुजुर्गों में मिलता है क्योंकि उनकी धमनियां काफ़ी स्टिफ होती हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन है वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसमें मरीज का ब्लड प्रेशर घर पर नॉर्मल रहता है, लेकिन जब कभी भी वो क्लिनिक या हॉस्पिटल में उसका बीपी नापा जाता है तो बढ़ा हुआ निकलता है। ऐसे मरीजों को 24 आवर्स एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर की मदद से ब्लड प्रेशर है या नहीं इसको डायग्नोज किया जा सकता है। आखिर में लेबाइल हाइपरटेंशन, जैसा कि नाम बता रहा है, लेबाइल यानी इसमें मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है एक पल में और दूसरे पल में नॉर्मल रह सकता है। नाउ इन दिस सेगमेंट लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। आखिर हाइपरटेंशन क्यों होता है और क्या कारण हो सकते हैं। हाइपरटेंशन को प्रिडोमिनेटली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जानकर आपको ताजुब होगा कि आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 85% पेशेंट्स में कोई कॉज निकल कर नहीं आता है, यानी कि इडियोपैथिक होता है। ऐसे मरीजों को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं और सिर्फ 10 से 15% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर का कोई कारण निकल कर आता है, जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन 85% पेशेंट्स में मिलता है। इट डेवलप्स ओवर टाइम, कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं मिलता है इसमें, और किस व्यक्ति में कब ब्लड प्रेशर होगा ये डिपेंड करता है उसके जेनेटिक्स, उसकी उम्र और लाइफस्टाइल के ऊपर। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, that is the causes of secondary hypertension. As we all know that detecting and diagnosing hypertension at earliest is very essential for preventing the end organ damage. The causes can be broadly classified into 7 types. The most important is renal, followed by endocrine, neurological causes, pregnancy-induced hypertension, cardiovascular hypertension, drugs, and miscellaneous category. To remember renal causes, use mnemonic AIR pad. A for acute nephritis, I for interstitial nephritis and pyelonephritis, R for renal artery stenosis, P for polycystic kidney disease, and D for diabetic nephropathy. Second most common causes are of endocrine and use mnemonic PACT.
P for pheochromocytoma, C for Cushing disease, T for thyroid disorders where both thyrotoxicosis and myxedema can be the causes of hypertension. Third important causes are of cardiovascular, CAR, CAAR, CAR, C for coarctation of aorta, A for arteriosclerosis, and AR for aortic regurgitation. Among drugs, the two most commonly used drugs in day-to-day practices that can cause hypertension are steroids, that is glucocorticoid, and OCPs. Besides the other rare causes, there are two clinical conditions that are very common, that is obstructive sleep apnea syndrome and hypercalcemia, that needs to be remembered in day-to-day practice. That's all for now. In next video on hypertension, we will learn effects of hypertension on body organ, symptoms, signs, investigations and treatment of hypertension.